Alright guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. So yep, another day and yet another beautiful location, and right now I am in Kemangundi. Kemangundi is a hill station in Chikmagalur district और ये प्लेस चिकमंगलुरु से 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और ये एक हिल स्टेशन है. And right now I am in this beautiful resort which is Kemangundi Hill Resort, and this resort is managed by Karnataka government. So yeah, it is owned and managed by Karnataka government and the place is really beautiful man. ये resort काफ़ी खूबसूरत है. I mean इसका location मुझे काफ़ी पसंद आया और यहाँ के ओवरऑल द प्लेस इज़ वेरी नाइस. ये जो रिज़ॉर्ट है ये इसका कंस्ट्रक्शन आई मीन स्लोप पे मतलब हिल स्लोप पे किया हुआ है, तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, रूम्स भी हम लोगों ने चेक किए हैं, रूम्स भी लगभग ओकेइश है, बट या ओवरऑल द प्लेस इज़ रियली नाइस. और सबसे ख़ास बात इस प्लेस की है जो व्यू ये प्रोवाइड करती है. आई मीन हर रूम में आपको बालकनी मिलेगी और बालकनी से जो व्यू आता है जेड पॉइंट का, जो सामने में जेड पॉइंट का जो पीक है उसका व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है. सो या दिस प्लेस इज़ अमेजिंग. और थोड़ी देर पहले ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं. अभी हम लोग चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके चेक इन किए हैं और अभी का प्लान हमारा ये है कि हम लोग जल्दी से फ्रेशन अप हो करके हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग जीप राइड पे निकलेंगे. जीप राइड इन द सेंस वी हैव टू गो टू हेबे वाटरफॉल. सो हेबे वाटरफॉल जाने के लिए जीप राइड आपको लेना पड़ता है क्योंकि पूरा रास्ता ऑफ रोड है. सो या वी आर गोइंग टू डू दैट. Alright guys, as you can see behind me, that is Hebbe Falls, and this is by far one of the best waterfall that I have ever seen. ये waterfall basically चिकमंगलुरु में है. हम लोग अभी केमनगुड़ी आए हुए हैं. तो ये waterfall काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ काफ़ी लोग भी है, काफ़ी बड़ा waterfall है और इसका हाइट भी काफ़ी अच्छा खासा है. यहाँ इस waterfall को आने के लिए आपको जीप हायर करना पड़ेगा. आई मीन जहाँ से केमनगुंडी व्यू पॉइंट से कुछ किलोमीटर दूर वहाँ से आपको जीप मिलेगा. सो आप वहाँ से जीप हायर कर सकते हो और जीप से यहाँ पे आ सकते हो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया. और हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ पे इस वाटरफॉल को देख करके. ये मेरा काफ़ी दिनों से प्लान था वाटरफॉल आने का, लेकिन हो नहीं पाया, बट फाइनली आई एम हियर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. Alright guys, so I'm back to my resort and right now I am sitting in this beautiful cafe of this resort or restaurant of this resort. थोड़ी देर पहले ही हम लोग अभी अपना जीप राइड ख़त्म करके वापस आए and the time right now is 5 o'clock I believe. जीप राइड काफ़ी अच्छा था, ऑफ रोडिंग काफ़ी मज़ा आया. The scenes were absolutely beautiful and breathtaking.
all the forest and the valleys. It was very nice, and also the waterfall, man. The waterfall was also very beautiful. I think ये मेरा second दूसरा सबसे favorite waterfall है after Malali waterfall, which was in Coorg. So yeah, ये भी काफ़ी beautiful waterfall था, और हम लोगों को trek भी करना पड़ा. Although it was 1 kilometer trek, but still it was a bit challenging. But yeah, overall the experience was very nice with Hebbe waterfall. What a beautiful view, isn't it? Alright guys, so right now I am in my resort. It's 6:30 in the morning I believe. हम लोग थोड़ी देर पहले ही अभी सो करके उठे, और इतनी जल्दी सो करके उठने का प्लान इसलिए है क्योंकि हम लोग जाएंगे जेड पॉइंट ट्रैकिंग करने के लिए. सो जेड पॉइंट इज़ अ पीक and the base is very near to the resort. It's like 2 to 3 minutes walking distance, और फिर वहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे. So the trekking distance is going to be 5 kilometers, and I think it will take 3 hours to complete the trek. 5 kilometers both ways. It's a beautiful trek. I have done this trek before a couple of times, so this is the third time I'll be doing this trek, and whenever I do this trek I feel very amazed because the trekking experience is very good always. The peak is very beautiful, and yeah, अभी सुबह बज रहे हैं 6:30. अभी हम लोग जाएंगे, जल्दी से चाय या कॉफ़ी पिएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रैक पे निकलेंगे.